Yeah, we are just waiting for all the platforms to go live because there are four platforms. Right. So, once again, good afternoon to everyone present here. And I don't know whoever is going to see it later, it's going to be good afternoon or good evening, whatever. So फ्रेंड्स फिर एक बार हम आज इस कड़ी में जुड़े हैं जो ब्रांडिंग से रिलेटेड है एंड एज यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी डन 9 सक्सेसफुल एपिसोड्स राइट एंड दिस इज आवर 10th एंड द लास्ट एज यू सॉ द पोस्टर इज द लास्ट वन कितने दिन तक वो पूछ जो है तो बढ़ ही रही थी बढ़ ही आई जस्ट थॉट कि इसको आज खत्म कर दो राइट and therefore we are going to cover it's actually not two baby steps today two इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम 2 points लेके जा रहे थे so it's going to be all of them remaining I think there are 5 which are remaining and then the best part is going to be कि इस सब का मिला के एक पूरा जो है निचोड़ आज समरी आपको मिलने वाला है so people who are joining it for the first time उनके लिए तो it's going to be like a feast okay and people who are joining every time उनके लिए it's going to be revision because we all know and since being medical student we know revision का कितना importance है right there's a concept it's little outlier but it's very important कि every night 80% every night 80% of our memory goes goes away it's evaporates क्यों? Because the software is resetting for grabbing the new information on the next. Now it's happening with 80%, right? So 20% है that goes to the long term memory. वो भी एक short term memory में जाता है and then from there onwards वो भी हर हफ्ते clean होता है, right? So जिस तरीके से हम घर को रोज थोड़ा clean करते हैं, फिर Sundays को और थोड़ा ज्यादा clean करते हैं, फिर monthly या yearly जो है थोड़ा और extra सफाई होती है. So whatever we want to be going into our long-term memory should be revisited and repeated and reiterated, right? So this is how it is, and therefore I keep repeating things every time for you all. It's also for your long-term memory, and if it goes into your long-term memory, then it will be into your implementation. And number two, also for you all to link up with the past episodes, right? So बहुत ज़्यादा समय न गवाते हुए फिर से एक बार बता देती हूँ कि मैं Dr. Shilpa Kotla. I am a pathologist and a pan India doctors recruitment consultant working under the brand name MediRecruiter. And uh, the episode that we are taking, branding, ये क्यों ले रहे हैं क्योंकि आपको लगेगा मैडम तो रिक्रूटमेंट करते हैं और मार्केटिंग की बात क्यों करते हैं तो फिर से एक बार आपको बता दूं कि मैंने 12 साल जो रिक्रूटमेंट किया है तो एक्चुअली 13 साल हो गए जो डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट किया है और रिक्रूटमेंट को बहुत नजदीक से देखा है तो आई हैव रियलाइज्ड कि देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु डोंट वांट टू वर्क इन सर्टेन हॉस्पिटल्स राइट चलो ठीक है पेरिफेरल लोकेशन के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को नहीं काम करना है फॉर द लोकेशन बट कितनी बार दे टेल कि मैडम गिव मी सम टाइम गिव मी 1 or 2 days आई विल चेक about this hospital and then we'll come back to you. And then they come back to us and they say, sorry, they will not work in that hospital. They will not work with that doctor. So this is what happens. And therefore, after seeing this breakdown so many times, and there are so many hospitals realizing that उन्हें डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं उनको डॉक्टर्स जॉब रिफ्यूज कर रहे हैं there are so many hospitals who have increased their salary scales also and still they are not getting doctors and that made me realize that ब्रांडिंग पे काम होना बहुत जरूरी है आमतौर पर हम ब्रांडिंग की बात क्यों करते हैं customers but we don't say customers we say patients when we're in the hospital industry we see patients so hospital patients को अट्रैक्ट करने के लिए हम ब्रांडिंग की बात करते हैं बट व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम स्पेशली टॉकिंग टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट राइट टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट so that of course it is going to help grab the patients but for me as of now the context is to attract good talent so coming to there are hospitals who are not getting good talent good doctors नहीं है good services नहीं है
And finally, what will be the owner doing? अगर अच्छे डॉक्टर्स उनके अंदर नहीं है, तो सर्विसेज हैम्पर होगी. And there are so many good hospitals which I come to know across India who are shutting down, who come to me and who say, मैडम कोई होगा तो कोई हमको दे देना है, चलाने के लिए देना है. Why? Because they did not know the game of running a hospital. And so, to run a hospital, the base starts with branding. That is what we are working on all these past 9 episodes, today being the 10th episode. तो दोस्तों, बहुत ज्यादा समय न गवाते हुए हम आज के पॉइंट्स पे जाएंगे. हम इस बार थोड़ा agenda change करते हैं. We will not go on the past points. We will go on the new points and then come to the past points and completely create a picture on branding में आखिर करना क्या है. Okay? So बहुत ज्यादा theory हो जाती है, तो थोड़ा सा practically हम उसको देखते हैं. So coming to the next points जो last time लिए थे, उससे आगे के points ये है कि हमें कुछ चीजें जो भी हम करते हैं, right? तो जो भी branding हम करते हैं उसमें hook का होना बहुत जरूरी है. What is a hook? Hook मतलब grab the attention, right? A hook कहाँ create होता है? Hook is something which is either your tagline, मतलब आपका जो हॉस्पिटल का टैगलाइन होगा, राइट? आपके लेटर हेड्स पे, आपके वेबसाइट पे कुछ ऐसा जो हुक कर दे, राइट? तो दैट इज व्हाट इज अ हुक. अब हुक एवरीडे पोस्ट आपके या एवरी टाइम, आई डोंट नो वेदर यू डू एवरी डे, बट एवरी टाइम व्हेन यू क्रिएट अ पोस्ट देयर शुड बी अ हुक. बिकॉज बहुत सारा क्रैप क्रैप ही बोलना पड़ेगा, और लेट अस से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया पे फ्लड हो रहा है. लाइक देयर इज so much of it coming out. Now, why should your prospect look, go onto your social media and look, he's scrolling, and usko jab aapka dikhta hai, so what is that particular reason that he should wait, he should click, and he should read, right? That is hook, hooking someone's attention. So एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ, फिर से दूंगी. A very nice hook that I came across. I mean, absolutely surprising, and that was, I got divorced. I said, one of my friend wrote this. I said, what's that? He got divorced. And then there were dot, dot, dot. And then when I clicked, it was, I got divorced with my mediocrity. I got divorced with my laziness. I got divorced with my, ordinary behavior. And I started, I jumped into, and I married to good habits. I said, boss, and then of course it goes without saying, I read it till the end, and so this is what is called as a hook. वो जो रूटीन होता है ना, रूटीन तरीके से लिखना, उसको बंद करना पड़ेगा. So these are the smart tips that I'm giving you, so that that what the audience really wants. So this is hook. Next is call to action. तो देखो दोस्तों, hook ये पहले आता है, call to action end में आता है. तो लेट्स से अभी मेडी रिक्रूटर्स का अगर मैं ब्रांडिंग कर रही हूँ, एंड इट्स ऑल एन एजुकेशन बेस्ड ब्रांडिंग. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट्स से मैंने कुछ हुक लगाया वहां पे कि इट्स नॉट दैट डॉक्टर्स वुड हैव पर्सनल लाइफ, doctors to have a wonderful and a surprising personal life, dot 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 dot, and then what is that surprise people will want to see, and then I will say whatever, like उससे कुछ भी connect मैं कर सकती हूँ, right? I can connect anything over there. So then अब चलो मैंने कुछ बता दिया, right? And they had a super wonderful personal life, and then therefore come to Medi Recruiters and get some jobs, and you will have a wonderful work life balance. ऐसा अगर मुझे उस पोस्ट में कहना है, तो चलो कह दिया, right? Now what after that, right? What after that? Now my job as into branding is not only to become popular. Actually, businesses are not only to become popular, they are something where if there is profit, you will survive. Otherwise, it will not survive. You and your business should survive, and हर चीज का डोम कर सकते हैं, बट हम पैसे का नहीं ला सकते, राइट? इसको मराठी में बोलते हैं, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया. सो नाउ what is call to action? Call to action is, if you want such jobs for yourself, or if you want vacancies for your, if you have some vacant positions in your hospital, approach us at this number, at this mail ID.
ये एक कंपल्सरी कॉल टू एक्शन होना बहुत ज़रूरी है आपके सोशल मीडिया पे, आपके वेबसाइट पे, और आपके इवन आपके विज़िटिंग कार्ड पे कि यार हाँ, आपका काम पसंद आया, बट हम करें किसे अप्रोच करें, राइट? So you have to give a call to action. Or then, you have seen click now and come in the WhatsApp group, click now and join the Facebook group, click now and go to the Telegram. This is very important, right? Don't shy away from that. And otherwise, how will you know कि आपके जो इतने सारे clients में से, I've always described clients into cold, warm, and hot, right? Cold is like they are never going to be your clients, never going to be your customers. Warm, they can be your customers sometime, not today, but they are still following you because उनको पता है आपकी ज़रूरत कभी ना कभी पड़ेगी, राइट? जैसे अगर किसी को किडनीज़ है और आप यूरो सर्जन हैं, तो वो तो आपको फॉलो करेगा ही बिकॉज़ उसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही और उसको डर है अपनी किडनीज़ को लेके, especially if he is a diabetic, he will follow you, right? So similarly, so that is a warm audience. And what is a hot audience? Someone who's actually having kidney stones, he will actually follow you and some fine day will, come to you. Like he actually is looking for someone like you. So that is a hot audience. So आपके ये पूरे इतने सारे सोशल मीडिया जहाँ तक पहुँच रहा है, उसमें से कोल्ड को छाँट के आपको वार्म और हॉट को अगर सेपरेट करना है, तो यू हैव टू ब्रिंग देम इनटू अ कम्युनिटी. लाइक इफ यू सी, we every time share a WhatsApp link in one of our comments, either first or second comment after every all of my post has a WhatsApp link. I don't put it into the main post because फेसबुक में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये जो काम कर रही हूँ, तो दोज प्लेटफॉर्म डोंट वांट टू प्रमोट व्हाट्सएप व्हिच इज आल्सो देयर कंपिटिटर, राइट? तो इसीलिए उसको लिंक में, दिस इज द अल्गोरिथमिक थिंग, तो उसको हम कमेंट में डालते हैं एंड फ्रॉम देयर पीपल क्लिक एंड कम इनटू माय यूनिवर्स ऑफ व्हाट्सएप, राइट? एंड देन इट बिकम्स अ वेरी पर्सनल थिंग. वी कैन अप्रोच देम, they can approach us, they know कौन सा, how, who are the admins, किन्हें कॉल करना है, like that. So that is called as call to action. Okay, we saw hook, we saw call to action. Third is going to be narrative. Okay, now everyone loves stories, right? Everyone loves stories, and therefore, not love stories. Okay, everyone loves to listen to stories, and therefore, and everyone has a story too, right? Even I have a story. Like, how did I come into many recruiters? Or I have multiple stories of my candidates, of my clients, right? कि some successful stories, some unsuccessful stories, जो भी है, but story में से बहुत मजा आता है. तो you also have to see to it that your, कहीं तो भी आप story का मसाला डालो, and हो सके तो authentic डालो, right? So there should be a narrative, right? Try to make it a narrative instead of only being informative. Make it narrative. If not every day, at least once in a while, right? And the last point in this section of marketing is repetition. So, दोस्तों, branding is many times interchangeably used for reputation, right? But it's not exactly that. Reputation थोड़ा सा is one of the factor in the big universe of branding, right? However, branding and reputation are directly proportional to each other. Therefore, friends, take care of your reputation. Okay, only do the things which will suit your reputation. Always think of the negative side of certain things that you do, right? And if exposed, what would be the complications, consequences? Always think of that. On the other hand, I will also, like, this was like एकदम serious आपको बना दिया. अगर कुछ ऐसे काम किए हैं तो आप एकदम डर जाओगे, बॉस, मेरा मेरा reputation का क्या? But there is a flip side to it also, that बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो रेपुटेशन को लेके, और बहुत ज्यादा परफेक्ट रेपुटेशन की चाह मत रखो, बिकॉज आप कितना भी अच्छा काम कर लो, चाहे आपने, लेट्स से आपने 1000 दिन प्रैक्टिस किया है, 1000 days you have been practicing, you are a doctor, you have been practicing, and all those 1000, each day, you did something great and good with a good intention and good heart, still there will be some lot of people who will not like your services, right?
and then and therefore and they may not feel you are a good person or you are doing it with a good intention. इसीलिए बहुत ज्यादा उसका स्ट्रेस मत लो, एफर्ट्स लो, बट परफेक्शन की चाहत मत रखो. Okay, and understand that it cannot be controlled. It is not completely in our control, but it is manageable. So, friends, with this we complete our complete, knowledge about branding. इसके आगे पीछे ब्रांडिंग में और कुछ नहीं है. इसके ये जो भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं, दैट इज लाइक आप चाहे जहां घूम लो पूरी दुनिया में और चाहे जितनी बुक्स खरीद लो और पढ़ लो, इसके आगे पीछे ये जो 20 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है पिछले 10 एपिसोड में, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है. एंड फॉर पीपल who are attending it for the first time, I know there are certain first timers also here, and I know there are some people who are regular. So उनके लिए this is going to be a feast which is going to come, and that is a summary. Okay, so what's the summary? Finally हम branding के लिए करें क्या? Okay, so all those 20 points will be coming to you very soon. So दोस्तों, ब्रांडिंग के लिए राइट, अपना ब्रांड ऊंचा बनाने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का, एंड लेट मी टेल यू, अपना खुद का सेल्फ पर्सनल ब्रांड भी होता है, राइट. पर्सनल ब्रांड को भी ऊंचा करना होगा. पीपल हु आर नॉट इनटू ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट एंटरप्रेन्योर्स एंड हु आर एम्प्लॉइज, दे आल्सो शुड थिंक अबाउट द पर्सनल ब्रांड, राइट. तो अपना पर्सनल ब्रांड ऊंचा बनाने के लिए व्हाट यू शुड डू इज, जो भी आपका क्लाइंट है, राइट, जो भी आपका क्लाइंट है, उनका अटेंशन ग्रैब करने का आपको सोचना चाहिए. और उनके कुछ प्री ऑक्यूपाइड उनका थॉट्स है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ रेडियोलॉजिस्ट, एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, और किसी कोई हॉट क्लाइंट है जिससे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, राइट, एंड ही हैज थॉट ऑफ समवन एल्स, and he suddenly comes across your social media post and he comes to you, he sees it, right. तो उसका प्री ऑक्यूपेशन था किसी और के साथ. आपके पोस्ट का मकसद ये होना चाहिए कि बस आपका जो प्री ऑक्यूपाइड थॉट है ना, या जो भी प्री ऑक्यूपाइड आपके दिमाग में बैठे, उनको छोड़ के मेरे पास आओ. तो यू हैव टू क्रिएट योर पोस्ट विद दैट कॉन्सेप्ट, राइट. सो दैट इज वन. सो प्री ऑक्यूपेशन को ब्रेक करके हमारी तरफ अटेंशन खींचना है. नंबर 2, रिसेप्टिविटी देखना है. ऐसा नहीं है कि या डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं पूरे इंडिया के लिए और हम पैम्पलेट्स कहाँ बांटेंगे, राइट. So your medium is important. What your language is, what language you use is important. This medium, मतलब social media, right? What social media platform you use? I always say that for me, who's doing Pan India Doctors Recruitment Consultancy, for me that platform there, that is LinkedIn, that is most important, right? Though I'm doing it everywhere, like Facebook, Instagram, and YouTube, and LinkedIn. But अगर मुझे किसी का एक platform बताओ तो मैं कहूँगी LinkedIn. I would be choosing him. So you should be knowing your clientele, wanders on which platform. That is very important for you. And then, तो आपको receptivity देखना है. You have to be very unique, not only in your, आपके product में, आपके services में, और आपके branding में आपका कुछ uniqueness होगा तो ही आप attention grab कर पाओगे. तो जैसे I always say my husband कि आप अपना जो छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है, ही इज अ पीडियाट्रिशियन, ऑलवेज से कि क्यों नहीं आप है ना, ये जो भी बच्चे आते हैं छोटे, उनका एक हेड सर्कमफेरेंस करना शुरू कर दो, तो कितना बढ़िया रहेगा. नो वन डज इट एंड यू विल डू इट, एंड ऑफ कोर्स दैट हैज गॉट सम सिग्निफिकेंस, राइट. सो नो वन इज डूइंग एंड यू आर डूइंग बिकम्स योर यूएसपी, राइट. सो ऐसा कुछ सोचो, राइट, ऐसा कुछ सोचो सो दैट आपके कंपटीटर्स से हटके कुछ आपका पॉइंट है. दिस इज अबाउट द सर्विसेज दैट यू आर गिविंग. Similarly about the about your marketing also, ऐसा कुछ हटके. जैसे a very nice example is just on the Monday that went, okay, you will see one quote that was posted from my side. Just go to whichever social media you are on, either आप Facebook पे हो या Instagram पे हो, आप Monday का मेरा quote देखिएगा. पीछे से ऐसे हॉस्पिटल में कॉरिडोर में डॉक्टर्स और सब चल रहे हैं और सामने से मेरा quote है. तो so wonderful, so unique, right. ऐसे कुछ ग्रैबिंग, अटेंशन ग्रैबिंग डिजाइन्स पे आपको के बारे में आपको सोचना चाहिए. एंड देन देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अवेयरनेस दैट योर क्लाइंट इज इनटू. सम आर एब्सोल्युटली नॉट अवेयर कि आप क्या करते हो, और सम आर 100% अवेयर कि आप ये करते हो और हमें आपसे सर्विस लेनी है, बस भाई दाम बता दो, टर्म्स एंड कंडीशंस बता दो. तो
ये जो है ना, ये पूरा फनल है, दे आर नॉट अवेयर बट दे नीड यू, राइट, टू 100% अवेयरनेस। तो आपका काम है सोशल मीडिया पे ऐसा ब्रांडिंग करो, राइट, ऐसा ब्रांडिंग करो कि ये कहीं भी किसी भी अवेयरनेस में लोग हो, बट योर पोस्ट विल ग्रैब देयर अटेंशन, एंड द बेस्ट फॉर्म टू डू इट इज education based marketing. Just keep educating about, to people, like, I have my friend come, client who is there live with us today, Dr. Vivek Ukede. His social media we do manage, okay, and हम लोग उसमें सिर्फ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में बोल रहे हैं, he keeps giving me feedback. Because of that people are now knowing कि मैं क्या करता हूँ, because of that people are knowing interventional radiology क्या है, right? So because education based awareness या post हम बना रहे हैं, so you don't have to, it looks very cheap, it looks very embarrassing also for us कि रोज कोई ऑफर कहाँ से लाएंगे, या and especially for doctors, how will it look like, what offer are we going to sell every single day? So that is gone. That was a wrong way of marketing. The marketing is nowadays only education based. Just education आप बाहर निकालो, information दो, people who are your hot and warm audience will come to you. And then also talk about end result, right? Like I am a pathologist, and if I say I do blood, urine, stool, semen examination and all, हाँ तो क्या? So what? We know you pathologist does that. Versus which I say that if you are a diabetic, come to me. I will give you a normal life. I will give you a pills-free life. How will it look? Like all diabetics, God, I really want this, right? काम वही कर रहे हैं, but उसको बस उसका फेस चेंज कर दिया है. So end result की बात करेंगे हम लोग branding में, and then if possible give them demonstration. If possible, give it in free. The best example for doctors is camps, right? Uh, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स जिसमें मैंने ये डाला. आप में से कितने लोगों को लगता है कैंप्स आपके लिए काम करते हैं? ऑलमोस्ट 90%. इट वाज अ जूम सेशन गोइंग ऑन. ऑलमोस्ट 90% सेड नो, 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 कैंप्स आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल. कैंप्स आर वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑल. एंड देन आई सेड, बॉस, डू यू नो कि कैंप में से ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है 100 लोग आए तो 90 लोग आपके पेशेंट्स हो जाएंगे. Come on, it's just a demonstration. It's just a look and feel you're giving to your prospective people, to your warm audience. Some of them are hot. Come, come to my hospital. Have a look of this. और अगर आप कहीं जाके करें तो at least I am the doctor. Come, talk to me. Become comfortable. Next time when you need me, you will think I should be the first person that comes to your mind. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेशन दो छोटा सा आपकी सर्विसेज का, और हो सके तो थोड़ा सा फ्री में दो, राइट, एंड वो थोड़ा सा ही होना चाहिए, राइट. सो नॉट दैट 10 बार आओ आपको 10 बार मैं फ्री में सर्विसेज दे दूंगा, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज थोड़ा सा. एंड देन there's a very important point: qualify and disqualify. Not that every person who walks to your clinic and asks the rates and says नहीं नहीं इतना कैसा चार्जेस है, 1000 रुपए आप चार्जेस लेते हैं, आप तो 500 लेना चाहिए, 400 लेना चाहिए. एंड देन हमारे इंस्ट्रक्शन है किसी को भी खाली नहीं जाने देना है. एंड देन वी ट्राई टू फिट इन सच पेशेंट्स. नो, राइट. You have to learn to qualify and disqualify your patient to your customers, right? Disqualification में आपको guilt ना हो, you should think from that perspective also. This is completely new, right? It's completely new कि किसी को जाने दिया रही. There are window shoppers. Don't worry about that at all. If they fit into your criteria, fine. If they don't fit, it's okay. So that is there. And then you should know what is the point of market entry. आपका market कहाँ है, वहाँ entry कब करना है, right? So this you should know, like especially this is for uh, जैसे अगर सपोज आप गायनेकोलॉजिस्ट है तो योर मार्केट इज नॉट इनटू योर यूथ, राइट. आप कॉलेजेस में जाके क्या कर लोगे? देख, स्पेशली ऑब्स्टेटिक बेस्ड प्रैक्टिस है तो आप वहां जाके क्या करोगे, या स्कूलों में, चलो यूथ का भी हम छोड़ देते हैं, स्कूलों में जाके हम क्या ही कर लेंगे, राइट. यू शुड नो आपको मार्केट कहाँ है और एंट्री कब करना है ना. ये नहीं कि आपने पूरे पॉपुलेशन को टारगेट करके पूरे पॉपुलेशन को आप ये करोगे. दैट वोंट वर्क. वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, राइट. सो पॉइंट ऑफ मार्केट एंट्री, एड्रेसेबिलिटी कैसे है आपके क्लाइंट्स की, लाइक लेट्स से आप ट्यूबरक्यूलोसिस के डॉक्टर हैं और आपको अभी बताओ इसमें से कितने लोग ट्यूबरक्यूलोसिस से पीड़ित है, या कितने लोगों के माँ बाप को ट्यूबरक्यूलोसिस था. सो दे वोंट रेज देयर हैंड्स, राइट. आप सपोज किसी पब्लिक इसको मीटिंग में एड्रेस कर रहे हैं, यू आर
TB chest doctor. You can't. So how is your addressability, right? But as of now, ये चीजें इसलिए solve हो गई है because SEO related जो marketing आजकल है, right? आप SEO में अगर keywords डाल दोगे कि who are the people browsing about tuberculosis, grab them and show them my Facebook advertisement. So in that way, it becomes, it has become very, very easy for you. Who are the patients who are, searching about kidney stone, what we can say, kidney stone related problems, about, some blocks here and there, about this, about that, about, jobs for doctors. Yes, you grab the keywords. Through the keywords, you grab their attention, show them your advertisement, and bring them in your universe, right? So that is addressability, right? Addressability को ऐसा है क्या करते हैं, फिर जो डिजायर है लोगों का उसको आपका पोस्ट जो है एड्रेस कर रहा है क्या, like you are a dermatologist, right? And you want to say that again the same thing, I will give you a good skin, a great hair, versus which if you want to look as beautiful as the Miss India this year, or it is possible, right? It is possible. If you want to have skin as wonderful as Bollywood actresses, come to me. I will give you that in 3 months. Just give your 3 months to me, and I will give you looks as good as Bollywood actresses. तो डिजायर को एड्रेस करने वाले आपके पोस्ट होने चाहिए. एंड देन विजुअलाइजेशन दो, जैसे इसी में विजुअलाइजेशन दिया है कि यू विल लुक एज गुड एज एक्ट्रेस, तो सडनली यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग योरसेल्फ लाइक दैट, यू मीट योर क्लाइंट एंड देन अगेन यू विल हुक देम. एंड देन इसी के लिए फ्रेमिंग अच्छा जरूरी है. एंड देन विद दैट जब भी हम कुछ कर रहे हैं, राइट, परमिशन की जरूरत बहुत है. बिकॉज परमिशन स्पेशली इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपका डेटा बेस है, राइट, पेशेंट्स कम टू यू, you take their phone numbers, and then if you want to throw a can, right, so you know that your loyal clients are your patients, right, or already who are your clients are loyal to you, right? They were hot audience to you, and they will be audience to you all the time. Audience matlab वही customers या patients. However, if you are sending them repeated messages, you should take care of this, that you have taken their permission, right? And if at all you have not done that, start doing it here onwards. When your receptionist takes the phone numbers, right? She should be saying, कि हम phone number ले रहे हैं. Is it okay if once in a while our some messages come to you? Is it okay? Then cool. If someone says no, please write the end note. एंड वन मोर इजी थिंग है, जो पुराना डेटा है उसको अगर आपको आजमाना है तो आप एक बार मैसेज तो शूट करके देखो. सडनली 4-5 फोन आपको आ जाएंगी. किसने आपको मेरा नंबर दिया? हु गेव यू माय नंबर? हु गेव यू द परमिशन टू मैसेज? Sorry sir, you will be deleted from this. And that becomes sufficient for you to understand, right? So you delete that from your database. So permissions these days are very important, right? And then last point that we took today, आपके पोस्ट में कुछ हुक होना चाहिए, आपके वेबसाइट में कुछ हुक होना चाहिए, so that you know again it hooks the people, right? It grabs attention. It's all about how do you grab the attention. There has to be call to action. कुछ काम करने लगाओ, कहीं उनको आने लगाओ, आपके यूनिवर्स में आने लगाओ. तो जैसे हम सुनते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉलो, आई हैव सीन दैट. मैं कितनी बार सोशल मीडिया के लिए कुछ फेस्टिवल के लिए जो पोस्ट बनाती हूँ, when I say like, share, subscribe, follow, to follow subscribers बढ़ते हैं. When I don't say that, they don't do that, right? So you have to tickle that here. अरे काम करो. And so that is call to action. And then see to it that as far as possible, share your narratives, right? Like I tell short narratives from my side, right? जैसे आप भी अपने narratives जहाँ जहाँ हो सके उतना बनाओ, so that the dry things become very interesting. And finally, जो भी कर रहे हो, जो भी इतना एफर्ट्स ले रहे हो, साइड बाय साइड रेपुटेशन का ध्यान रखो. रेपुटेशन का ध्यान रख रहे हो, उस वक्त ये भी ध्यान रखो, बहुत उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हर किसी को खुश नहीं कर पाओगे, राइट? कोई तो होंगे जो आपसे नाराज होके जाएंगे, जिसके लिए यू शुड बी ओके अबाउट इट, राइट? As far as the percentage is more on the happy side and less on the unhappy side, you should be saying good job, right? So दोस्तों, I hope all these points, 20 points, will help you in your branding endeavors, right? And
if at all you are, and when you start your uh, efforts, you're on the track of branding. If at all you have any challenges, please feel free to approach me on whichever platform you are. I keep a tab on all of them. You can just DM me. You can write in the comments. If you want to approach me, we will approach you. Right? You just have to write in the comments. With this, since we are finishing this, I would like few of your comments in the comment box that about your feedback. How did you find it? Was it useful? Was it useful practically? बहुत ज़्यादा theory पर नहीं लगा, etc. Please, take some time and write there in the comment box so that I understand कि अगली series जो शुरू करनी है उसमें what do I have to titrate and modify. Yeah, so please do the needful, friends. Yes, thank you. Thank you. I'm seeing some comments coming. Thank you so much. Yeah. So, दोस्तों इसी के साथ आपके सीखने के जज्बे को सलाम करते हुए मैं डॉक्टर शिल्पा तोतला आप सभी से विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और किसी टॉपिक के साथ जिसमें you will feel enlightened and you will be given a lot of tips for something which will help you in your recruitment endeavors. तब तक के लिए bye bye. Have a great week ahead. Thank you.